good morning. So sorry, good evening, everyone. Hello, ma'am. Hello, how are you all? Good evening, Good, ma'am. ma'am. And are you? Good evening, Raman. How are you? Good, ma'am. How are you? I'm good, thank you. Okay, so what you all did in the weekends? How was your weekend spent? Nothing special. Okay, as usual, huh? Yeah, ma'am. Okay, so did you all practice? Yes, ma'am. Okay, practice for what? Ma'am, I just practice on speaking. Okay, so how was your score in application? Ma'am, 6. 6. And what about I have writing? always 6. Always 6. Yeah. Why you are not able to improve? What is lagging Ma'am, behind? You're facing difficulty with what? Hmm? I don't know, ma'am, but I think so. Vocabulary. Vocabulary. Yes, it can Yeah. be. Always look for the results. है ना कि why you got this score. Errors Yes, check ma'am. क्या करो? What are the errors you're making? Yes, ma'am. Okay. Okay. What about others? Are you all practicing? And please be regular in these sessions. इनको miss out नहीं करो. You have a chance that you can attend these live sessions free of cost, and you can have all your doubts and queries and the whole IELTS course I am completing in these sessions, right? We have covered detailed like version of reading module and speaking too. Now very soon after completing this writing part, I'm going to start with listening also. And listening is very scoring. Do you all practice for listening? Yes, ma'am. We do. Hi, ma'am. Hi, how are you? So how much score you are getting, Raman, in the listening part? Ma'am, it's so low. 4.5. Why? I don't know. मतलब ਉਹ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਆ. Punjabi ज़्यादा use करते हो, right? Try Yes, to ma'am. focus, try to speak, try to hear everything in English. पता है, it takes Okay, ma'am. only couple of days. बहुत ज़्यादा time नहीं लगता, only couple of days. अगर Okay, ma'am. आप if you start मतलब you should have this from inside कि नहीं, we have to learn this, है ना, हमें करना है. Yes, ma'am. Start listening to all English even radio sessions सुनो. वो Netflix है आजकल, तो watch some movies. कुछ भी देखो, just change the audio. उसको ऑडियो चेंज करो, विद सबटाइटल्स कर दो. अगर ऑडियो भाग रहा है, सबटाइटल्स तो यू Yes, कैन सी ना. yes, ma'am. ट्राई टू कॉपी दैट. Okay, ma'am. I ठीक है, will. उनकी इंटोनेशन को कॉपी करो, एक्सेंट को कॉपी नहीं करना. Okay, ma'am. फोकस ऑन दिस. अगर इस पे फोकस करोगे, योर स्पीकिंग विल इम्प्रूव एंड योर लिसनिंग कैपेबिलिटी, लिसनिंग स्किल्स भी आपकी इम्प्रूव होगी. डू Okay, दिस ma'am. एटलीस्ट, मतलब आई वुड से इफ यू हैव टाइम फॉर 1 hour, ट्राई टू वॉच इट. Okay, ma'am. ठीक है, अडेप्ट करो उसको. Okay, ma'am. एंड व्हेन यू आर प्लानिंग टू गिव एग्जाम, रमन? Ma'am, not now. You I have, need time. so that's good if you have time. So make Yeah. yourself that yes, you have to do it, and you will devote this much time in only listening or watching some English videos. Okay, ma'am. Okay. Yes, ma'am.
and be regular in all the sessions. वैसे तो you Yes, are a regular student, but yes, yeah. to watch all the sessions which are I'm updating now 15 days IELTS course. So you can check that in the application पर भी, और YouTube पे भी देख सकते हो कि 15 days IELTS course भी अब update हो रहा है. Reading Okay, module ma'am. is done. You can complete reading in 4 days. But Okay, this ma'am. is for this, basically this 15 days IELTS course is for the candidates who know about IELTS. ठीक है? Only Okay, it's for them. But if you are a complete beginner, then you have to watch these sessions. okay, ma'am. Okay? Yes, ma'am. Yes. Anybody else? Any doubts, or shall we start with our session? मैम आई हैव अ क्वेश्चन. Yes, Deepika. मैम जैसे मैंने ना एक जीटी का टेस्ट किया था, मैं ना ट्राई कर रही थी, तो वो ना एक सैंपल था 9B जीटी कैम्ब्रिज बुक में से. तो उसके ना मेरे ना आंसर्स 2 गलत हो गए उसमें. Okay. पता नहीं मेरे को क्या One thing उन्होंने I ना want you to please speak in English with me. है ना, हम IELTS अ, प्रिपेयर कर रहे हैं, तो please we can even make a little efforts to have a speaking improve, right? ओके ओके Yeah. मैम. Yes. So my confusion is regarding with the pattern of the questions, because in the questions conditions is given, then you have to write in 3 words. So the answer is 25% and I have written in 25% in words. But when I have checked my answers, then it is wrong. So I don't understand what is the mistake I have done, or what anything else in Where this. have you checked the answers? In the book? Yes, ma'am. No, it's correct. If you have written 25% in words, 25 is again 2 words, right? And then Hans. percent is a 1 word. So it's correct. You can write it. मैम बट मैंने ना फिर आई हैव चेक What फ्रॉम was द the गूगल देन instruction? Words or number? वर्ड्स मैम. हाँ, so words में तो you can write this. मैम पर उन्होंने बोला था कि जो मतलब पैटर्न नहीं चेंज करना उसका, जो हाँ. उन्होंने दिया हुआ है वैसे ही रखना है. जैसे उसमें टेबल बना हुआ था क्वेश्चंस के रिगार्डिंग, मतलब जिस पैराग्राफ में आंसर्स है ना, उसमें 25% इन नंबर्स में लिखा हुआ था. तो फिर मैंने गूगल से चेक किया, तो उन्होंने बताया कि जो क्वेश्चन जैसा है ना उसका पैटर्न अपनी तरफ से चेंज नहीं करना. वो तुमने 25 लिख के परसेंट को 2 वर्ड्स में लिख देना था इंग्लिश में. तो Okay. मेरे को इसी में डाउट हो गई कि फिर हम अगर फाइनल एग्जाम में ऐसा आ जाएगा तो हम फिर कैसे करेंगे, उसका क्या पता चलेगा. देखो, इट इज करेक्ट. आप दोनों फॉर्मेट्स के थ्रू लिख सकते हो. देयर इज नो प्रॉब्लम. आप उसको नंबर में लिखो या आप उसको वर्ड्स में लिखो, बोथ आर एक्सेप्टेबल. आपको सिर्फ अपनी वर्ड लिमिट चेक करनी है. व्हाट ओके आई मैम. डू, ठीक है, ये डाउट्स रहता है ना, तो व्हाट आई डू इन द लास्ट सेशन, आई गेस पैराफ्रेजिंग वाले में ये नहीं है. आई विल मेक श्योर कि मैं ये वाला एक सेशन आपको कराऊं जिसमें यू कैन हैव ऑल योर डाउट्स अबाउट कि आपको टाइमिंग्स कैसे लिखनी है व्हेन इट्स यस मैम. 9:30 AM. तो AM इज कंसिडर, AM इज अ सिंबल, ठीक है, यस मैम. which is not consider. 9:30 कंसिडर किया जाता है. वो एक अनदर वर्ड या एक वन वर्ड काउंट नहीं होता AM, राइट? यस मैम. And जैसे like you have this contraction words or you have यस hyphenated words, so 3-4 hyphenated words भी आ जाएंगे, still it will be counted as one. ठीक है, तो यस मैम. I'll try to make a session, but writing के last में ही कर सकते हैं because अभी तो we have scheduled all classes. I will try to do it. ठीक है, then Okay. we can have all our doubts in that part. Okay मैम. Okay, anyone else? Ma'am, I have one question. Yes, Raman. Ma'am, IELTS UK VI, it's different from this. Little bit different, but not completely. Yes, the structure is little different. Just Google out what is the difference between IELTS UKVI and IELTS test. Then you will get to know about everything. Okay. Okay, ma'am. Okay, so let's start today's session. We will talk about 8 steps that will help you achieve band 8 in your writing task 2. है ना, तो कौन से वो steps हैं जो आपको follow करने हैं so that आपका क्या आएगा, band 8, right? So now what is writing task 2? As you all know, writing task 2 में आपको एक essay writing करना होता है. हमने last session में introduction करा था, right? Yes, ma'am.
एंड पैरामीटर्स कर रहे थे कि आपकी राइटिंग कैसे इवैल्यूएट होती है एंड व्हाट इवैल्यूएटर्स आर लुकिंग फॉर, एग्जामिनर्स व्हाट दे चेक इन योर essay writing. Now these 8 steps will help you know कि आपको स्ट्रक्चर कैसे करना है अपने ऐसे को, मिस्टेक्स जो आपको अवॉइड करनी है, और असेसमेंट क्राइटेरिया. असेसमेंट क्राइटेरिया मीन्स the band descriptors. So we will look at all those positive features. So band descriptors के according, first one is task response. Task response quickly करते हैं because we know about it. टास्क रिस्पॉन्स मीन्स जब आपको सफिशिएंटली एड्रेस करना है अपने सारे पार्ट्स ऑफ द टास्क को. सो कैन एनीबडी टेल मी, अगर लेटर राइटिंग आता है तो हमें क्या फोकस करना है, व्हाट वी नीड टू एड्रेस इन ऑल पार्ट्स ऑफ द टास्क? Raman, you are from GT, right? Yes, ma'am. How do we fulfill task response in letter writing? कैसे हम एड्रेस करेंगे ऑल पार्ट्स ऑफ द टास्क? Ma'am, according to question. But what will be there in the question? Like birthday question detailing. So basically we will start with salutation. हम salutation देखेंगे. salutation के बाद हमारा purpose क्या है letter का. लेटर का पर्पस, दैट मीन्स रीजन फॉर राइटिंग द लेटर. लिखने के बाद जो हमारे 3 बुलेट पॉइंट्स जो लेटर में पूछे जाते हैं, वी विल राइट अबाउट इट सेपरेटली. और वी विल मेक श्योर कि जो हमारा बुलेट पॉइंट है उसमें एक एलिमेंट, एक क्वेश्चन पूछा गया है या 2 एलिमेंट्स हैं टू आंसर. सो वी विल फोकस ऑन ईच एंड एवरी डिटेल. हम हर डिटेल पे फोकस करेंगे तभी हम एड्रेस कर पाएंगे ऑल पार्ट्स ऑफ द टास्क. सेम गोज फॉर एकेडमिक राइटिंग. अगर हम रिपोर्ट राइटिंग की बात करते हैं, रिपोर्ट राइटिंग में वी विल मेक श्योर कि हमने इंट्रोडक्शन लिखा है. इंट्रोडक्शन में हमने क्या क्या चीजें मेंशन करनी है, कि व्हाट इज द टॉपिक, किसके बारे में लिख रहे हैं हम. ठीक है, उसमें हमें ईयर्स क्या दिए, टाइम पीरियड क्या दिया है, एलिमेंट्स क्या दिए हुए हैं, कि कब से कब का डेटा है, कहाँ का डेटा है. वी विल मेंशन अबाउट ऑल दीज थिंग्स इन द इंट्रोडक्शन पार्ट. और कुछ मेंशन नहीं करना कि एक्स एक्सिस पे ये है, वाई एक्सिस पे ये है, ग्रीन कलर ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ब्लू कलर ये. नो, नथिंग. वी विल ओनली फोकस ऑन कि हमारा बार ग्राफ या लाइन ग्राफ हमें क्या डिपिक्ट कर रहा है, क्या इंफॉर्मेशन दी गई है, बार ग्राफ किसके बारे में, राइट. सेकेंड इज, जब हम ओवरव्यू लिखेंगे तब हम सारे फीचर्स को हाईलाइट करेंगे जो भी हमारे इंपॉर्टेंट है. द मेन फीचर्स, अपवर्ड ट्रेंड क्या है, डाउनवर्ड ट्रेंड क्या है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्या है, मेन हाईलाइट है. और उसके बाद की फीचर्स में हम सारे फिगर्स, नंबर्स को राइट डाउन करेंगे. वी विल नॉट लीव एनी फीचर. हम किसी भी फीचर को लीव आउट नहीं कर सकते. अगर हमने लीव आउट करा दैट मीन्स हमने एड्रेस नहीं करा उसको करेक्टली. ओके, सो वेल डेवलप्ड रिस्पॉन्स हमें लिखना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जिसमें हम रेलेवेंट आंसर लिखेंगे, एक्सटेंडेड लिखेंगे, सपोर्टिंग आइडियाज लिखेंगे. सो सेम हम ऐसे ही राइटिंग टास्क 1 में भी करते हैं और टास्क 2 में भी करते हैं. टास्क 2 में हमें फोकस करना है कि हमारा राइटिंग का क्वेश्चन क्या है. जो भी हमारा क्वेश्चन है हमें उस क्वेश्चन से रिलेटेड ही अपना आंसर लिखना है, ऑफ द टॉपिक नहीं लिखना. और उसके साथ हमारा WH क्वेश्चन क्या है, एडवांटेजेस का है, डिसएडवांटेजेस है, प्रॉब्लम्स है, या फिर कॉजेज एंड सॉल्यूशन है, या फिर एग्री और डिसएग्री है, और सिंपली ओपिनियन बेस्ड है. सो वी विल राइट अ वेल डेवलप्ड रिस्पॉन्स. कोहेरेंस एंड कोहेजन, सीक्वेंसिंग करनी है इंफॉर्मेशन की, आइडियाज लॉजिकली अपने अरेंज करने हैं. इलॉजिकल नहीं करना कि कहीं पे कोई पॉइंट लिख दिया, कहीं पे कोई, एंड देन यू हैव नो कनेक्शन बिटवीन. ठीक है. यूज पैराग्राफिंग सफिशिएंटली एंड अप्रोप्रिएटली. पैराग्राफ्स यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है. जब आप ऐसे राइटिंग लिखते हो, यू आर सपोज टू राइट 4 पैराग्राफ्स, मिनिमम 4 पैराग्राफ्स. आप 5 भी लिख सकते हो, बट ओनली इन द केस ऑफ ओपिनियन ऐसे. लेक्सिकल रिसोर्सेज, wide range of vocabulary, fluently, flexibly, to convey precise meaning. Skillfully use uncommon lexical items. Uncommon lexical items means the uncommon vocabulary. Occasional inaccuracy चलेगी, but not frequent errors. बार बार errors नहीं होने चाहिए. Rare errors अगर spelling में है तो ठीक है, but not always. तो फिर आपके marks deduct होंगे. Wide range of structure होना चाहिए ग्रामर में. मेजॉरिटी ऑफ सेंटेंसेस आपके एरर फ्री होने चाहिए. ओकेजनल एरर्स और इनएप्रोप्रिएसी, देखो
We all are not robots, है ना, हम robots तो नहीं है. We can make little errors, but वो avoid हो जाते. Okay, so let's look at the process, 8 steps. First one, answer is relevant to the question. हमने लास्ट सेशन में एक टॉपिक करा था, ईटिंग मीट कैन कॉज सिवियर हेल्थ प्रॉब्लम्स, राइट. एक सैम्पल क्वेश्चन देखा था. तो अगर उसी सेम क्वेश्चन को आज मैं पिकअप करूं, अगर आप ईटिंग मीट के अलावा कुछ भी ऐसी चीज लिख देते हो जिससे हेल्थ प्रॉब्लम कॉज हो रही है, दैट मीन्स योर आंसर इज नॉट रेलेवेंट टू द क्वेश्चन. क्योंकि आपका टॉपिक है कि ईटिंग मीट कैन कॉज सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम. सो आपको सिर्फ वही पॉइंट्स लिखने हैं जो ये आपको बताते हैं कि मीट के थ्रू क्या क्या प्रॉब्लम्स कॉज होती है. सो व्हेन यू आर राइटिंग आंसर रेलेवेंट टू द क्वेश्चन, ओनली देन यू विल गेट योर स्कोर. ठीक है. डोंट प्रोड्यूस एन एसे दैट इज क्लोज टू अ टॉपिक दैट यू हैव प्रीवियसली प्रिपेयर्ड. सिर्फ लिटिल नॉलेज आपको पता है, 2-4 लाइनें, और आप अगर उसी से उसे मैचअप करने की कोशिश करोगे बट योर क्वेश्चन इज डिफरेंट, देन मेक श्योर कि आपके आइडियाज रेलेवेंट होने चाहिए. अगर इरेलेवेंट हुए तो आपको कोई स्कोर नहीं मिलने वाला. एंड एवरेज स्कोर आपको 5.5 ही मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा. So if you generalize too much and are not specific enough, this will affect your ideas, how your ideas are presented to the examiner. So make sure आपके डूज क्या हैं कि आप आइडियाज को डायरेक्टली रिलेट करो अपने क्वेश्चन से. जब तक आप Ma'am, can you please repeat whatever you said just right now? I am saying that you have to write your ideas relevant to the question, not irrelevant. ऑन द टॉपिक आप बात करोगे, मेक श्योर कि जो आप आइडियाज लिख रहे हो वो डायरेक्टली किससे रिलेट करते हैं, आपके क्वेश्चन से रिलेट करते हैं. सो क्वेश्चन से रिलेट करने के लिए यू हैव टू रीड योर क्वेश्चन वेरी केयरफुली. उन आइडियाज और एग्जाम्पल्स को भी आप लिख सकते हो जिससे आप फेमिलियर हो और आपके टॉपिक से रिलेटेड है. Extend your answer to include a number of ideas that will support the question. Now again, whenever we write, in the next session when I'm going to teach you about how to write a simple answer or how to write an answer, then I will tell you कि each paragraph में there is a topic statement and then you extend that topic statement with examples and supporting statements, right? So same way you have to extend your answer so that you can include the number of ideas and that will support your statement. Whenever we think of some of the ideas, हम कुछ ideas सोचते हैं कि क्यों हमने ये opinion लिया, हमने क्यों ये stand लिया, right? So उस stand लेने के पीछे, उस agree और disagree के पीछे कुछ reasons होते हैं. वो reasons और कुछ नहीं, आपके supporting ideas होते हैं. सो उन सपोर्टिंग आइडियाज को हम एक टॉपिक स्टेटमेंट का नाम देते हैं, दैट दिस इज द टॉपिक स्टेटमेंट और ये हमारी एक्सप्लेनेशन है. एक्सप्लेनेशन इज नथिंग बट द सपोर्टिंग स्टेटमेंट्स, राइट. नाउ डू नॉट इंक्लूड एनी इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन. इररेलेवेंट मींस व्हिच इज नॉट रिलेटेड टू योर टॉपिक. जो आपके टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, आप ऑफ द टॉपिक जाके अपने आंसर को नहीं लिख सकते, राइट. ओवर जनरलाइज नहीं करना. Just write less. Now what I suggest my student is कि कम लिखो but अच्छा लिखो. It's not कि आपको 250 word limit बोली है, आप 270 या 280 तक पहुंचो. 260 is good enough. 255 is also good. 250 is also good. अगर आपने उसको ओवर जनरलाइज नहीं करा, ऑन द टॉपिक लिखा है एंड क्लियरली अपनी सारी चीजों को मेंशन किया, राइट. Don't produce a memorize essay. Memorize essay कभी नहीं. Sample answers are there for you ताकि आपको एक हेल्प मिले टू लुक एट कि आपको स्ट्रक्चर कैसे करना है, आइडियाज कैसे लिखने हैं, वोकैबुलरी कैसे ऐड ऑन करनी है. बट नेवर लर्न एनी ऐसे. आपको कोई ऐसे को लर्न नहीं करना, राइट. Don't present recent research or statistics related to the topic at least 40% of all men. ऐसे एग्जाम्पल्स आपको नहीं लिखने हैं, राइट. Next step is answer all parts of the question. Part 1, step 1 is clear? Yes, please. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Step 2 is answer all parts of the question. Now, what about answer all parts means? Any idea?
What is meant by answer all parts of the question? Question में कितने parts होते हैं? Ma'am, it can be two parts, two questions, can be two views. Yes. Sometimes it can be three questions also. Depends on the question. Yes, exactly. So when you're going to read the question very carefully, right? So only then you can decide that how many parts are there in the question. जब तक आप question को carefully नहीं read करोगे, how you will come to know कि आपको कितने parts को answer करना है, right? So look at some example IELTS question prompts को देखो. There are so many questions. अगर आप application में जाके देखो, each category में there are almost 15 to 20 questions. हर क्वेश्चन को रीड करो एंड देन सी कितने पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन में. आपको अपना ओपिनियन प्रेजेंट करना है. पार्ट 1 है, पार्ट 2 है, कितने पार्ट्स हैं. सो रिमेंबर कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको प्रेजेंट करना है क्लियर पोजीशन जब आप आंसर करते हो अपने स्टेटमेंट को, ताकि आप एग्जामिनर को ये शो कर पाओ कि यस योर क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड और आपने वो पोजीशन क्लियर करा. लाइक सी एग्जांपल हियर, आपका क्वेश्चन टाइप है to what extent do you agree or disagree with this statement? So this is only one part question कि आपसे पूछा गया आप agree करते हो या disagree करते हो, right? So यहाँ पे आपका जो opinion है, yes it is required. Agree disagree is nothing but a opinion based question, है ना. आपसे पूछा गया ना कि आप agree करते हो या disagree करते हो, that means आपसे आपका opinion पूछा गया, right? So this is only one part question. यहाँ पे आपको agree करना है और या फिर disagree करना है, and then you will write your statements, your supporting points accordingly, right? Second is discuss both views and give your opinion. So this is how many parts? यहाँ पे आपको कितने parts लिखने हैं? Yes. In discuss both view, in the last session we discussed about all the types of question. हमने सारे types of question करे हैं last session में. Yes, anyone? Discuss both views and give your opinion. I mean, both view. Two side. This is basically three parts. इसमें आपको three parts को address करना है. Discuss both views means आपके पास already two views हैं. तो उन दो views को तो आप address करोगे, right? And the Yes, ma'am. third one is कि आपको अपना opinion देना है. So Yes, that ma'am. means आपको three tasks यहाँ पे perform करने हैं. First view के बारे में you have to state, second view के बारे में you have to state, and the third one is your opinion. So that means you will discuss here three parts आपको address करने हैं यहाँ पे, right? Yes, ma'am. Next example, double question essay. Why is this so? Give reasons for this and solution. So अगर आपका ये क्वेश्चन आता है, कोई भी स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट के साथ आपका क्वेश्चन है why is this so? So this is one part. Give reasons for this. This is second part. And solutions. This is third part. So ये three part का question है. Ma'am, Yes, Zareen. then you mean to say that for this question we have to write 5 paragraphs as a whole? Yes, you can. Because why is this so? This is first question. Give reasons for this, second paragraph, and solutions, third paragraph. So you're supposed to write 5 paragraphs here because we write conclusion and introduction also. Ma'am, according to your experience, which is the most difficult type of question you think? I don't think that there is any difficult type of question, Zareen. It's all about how do you understand your question well and how do you respond to it. Right? It Okay. depends on the topic you're familiar with and it depends on how much you're comprehending your question. अगर आप question को अच्छे से read करते हो, comprehend करते हो, then you can write it easily. Whether you are supposed to write 4 or you're supposed to write 5 paragraphs. Nothing is difficult because all the questions are based on daily life. Right? A very common everyday situations will be there.
Now see the next one. Do the advantages of international tourism outweighs the advantages? So this is simply about advantages and disadvantages, but they are asking you about outweigh. So outweigh means which is more heavier. किसका weight ज्यादा है? Advantages का ज्यादा है या disadvantages का ज्यादा है? Right? See the next one. Why is this so? What effect does it have on the individual and society? So what do you think? How many parts are here? Why is this so? This is one part. What effect does it have on the individual? This is second part. And on the society, this is the third part. So you must give reasons. Okay, you have to give reasons. You have to suggest what effect does it have on society पे क्या effect है और individuals पे क्या effect है, ये भी आपको लिखना है. So make sure कि आप answer करो all parts. अगर आप इसको skip कर देते हो, you can never score more than 6. 6 बैंड से ऊपर कभी नहीं आएगा अगर आपने ऑल पार्ट्स को आंसर नहीं करा, बिकॉज टास्क रिस्पॉन्स में आप 5.5 या 6 पे लाई करोगे, राइट? सो व्हाट आर द डूज फॉर दिस स्टेप इज कि रीड करो क्वेश्चन को केयरफुली, डिसाइड करो कि कितने पार्ट्स है. मेक श्योर यू अंडरलाइन. जब भी आप क्वेश्चन को रीड करते हो अंडरलाइन करो कि मुझे इस पार्ट को भी आंसर करना है एंड दिस ऑल्सो. प्रेजेंट योर ओपिनियन, सपोर्ट करो उसे थ्रू आउट द एसे. अगर आपको पूछा गया है बोथ व्यूज के बारे में, राइट, तो मेक श्योर कि आप ईच व्यू को इक्वली प्रेजेंट करो. एंड इफ यू आर आस्क्ड टू गिव एडवांटेजेस, सो एटलीस्ट 2 एडवांटेजेस लिखो, राइट? यू मे नीड टू कॉमेंट ऑन मोर देन 1 एलिमेंट, सो मेक श्योर कितने एलिमेंट्स आपके क्वेश्चन में आपको वो लिखना है. एंड राइट मोर देन 250 वर्ड्स. डोंट इग्नोर पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन. आपको इग्नोर नहीं करना, अदरवाइज आप टास्क रिस्पॉन्स में कभी स्कोर नहीं कर पाओगे. डोंट एज्यूम कि आपका ओपिनियन क्लियर है. फर्स्ट पर्सन बन के इंश्योर करो एग्जामिनर को कि आप क्या सोचते हो और लिखो कि यस आई थिंक दिस और आई बिलीव दिस. जब भी आपसे आपका ओपिनियन पूछा जाएगा यू विल मेंशन अबाउट इट. ओके, टेल द एग्जामिनर व्हाट यू आर गोइंग टू से एंड व्हाट यू हैव सेड and produce a short essay. No, don't produce a short essay. आपको short essay नहीं लिखना, right? Step number 3 is organize your essay logically with clear progression using linking phrases. अब you know about coherence and cohesion, ठीक है? तो ideas express होने चाहिए clearly. जैसे introduction से start करोगे, moving through body para 1, body para 2 and then conclusion लिखो. तो अगर आपसे बोथ व्यूज पूछा गया एंड गिव योर ओपिनियन, तो अपना ओपिनियन आप बिगनिंग में भी मेंशन करोगे, राइट? बिगनिंग ऑफ द एसे में, एंड देन आप मूव करोगे ऑन टू प्रेजेंट अबाउट बोथ द व्यूज. देन यू केम बैक टू योर ओन ओपिनियन और कंक्लूड करोगे अपने एसे को, राइट? इससे पता लगता है कि आपने लॉजिकल वे में प्रेजेंट करा है अपने आइडियाज को, राइट? डू यूज रेंज ऑफ लिंकिंग वर्ड्स एंड फ्रेजेस. कनेक्टर्स, डिस्कोर्स मार्कर्स का आपको यूज करना है, बट ओवर यूज नहीं करना, राइट? फ्रेजेस यूज करने हैं, बेसिक लिंकर्स मैंने आपको सारी वोकैबुलरी कराई है, राइट? इन द सेशन नंबर 2 हमने सारी वोकैबुलरी करी है, तो मेक श्योर आप उसको फॉलो करो. पंक्चुएशंस देखो कहाँ पे आपका फुल स्टॉप आएगा, कहाँ पे आपको कॉमास यूज करने. आइडियाज को सिक्वेंशली अरेंज करो, लॉजिकली अरेंज करो, सेपरेट पैराग्राफिंग करो. एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस सेम पैराग्राफ में नहीं आएंगे. एडवांटेजेस डिफरेंट पैराग्राफ, डिसएडवांटेजेस डिफरेंट पैराग्राफ. पैराग्राफिंग सेपरेट पैराग्राफ्स आपको बनाने हैं. इंट्रोडक्शन का अलग, बॉडी पैरा 1 अलग, बॉडी पैरा 2 एंड देन कंक्लूजन. और अगर आपको लगता है कि योर क्वेश्चन डिमांड्स फॉर 5th पैराग्राफ, तो मेक 1 मोर पैराग्राफ. ओके Ma'am, can we put 2 ideas in 1 paragraph at the same time? If now suppose ideas, when you're going to write about ideas, only during your agree and disagree questions, right? If you think that you have 4 ideas, you can write about 2 ideas or otherwise elaborate 1 idea in 1 paragraph. When it comes to advantages, you have to write 2 advantages and then next paragraph 2 disadvantages. When it comes to discuss both views, तो आपके पास views already है, you have to just support it.
right? Okay. Ma'am, Mhm. as a whole, 4 advantages we have to mention. No. 2 advantages and 2 disadvantages. 2 advantages and 2 disadvantages. Okay. Yes, exactly. Because a question can never be come without disadvantage. आपका advantage और disadvantage का question साथ में ही आता है, right? Yes, ma'am. Don't overuse basic linking words. आपको overuse नहीं करना. कि first reason for this is, the primary reason for this is, जो भी हम अपनी topic statement को start करने के लिए use करते हैं, right? Start every sentence. Don't start every sentence with a linker. Some people believe that. However, individuals must also take responsibility of this. I believe this. On the other hand, so हर sentence को आपको linker के साथ start नहीं करना. Don't use numbers, symbols और abbreviations. ये आपको बिल्कुल भी ऐसे writing में नहीं लिखने हैं. Don't use headings or subheadings. Don't underline words or phrases. आपको अपने ऐसे राइटिंग में कुछ भी, नॉट इवन इन लेटर और रिपोर्ट राइटिंग में कुछ भी अंडरलाइन नहीं करना. डोंट यूज वन सेंटेंस पैराग्राफ. डोंट स्टार्ट एवरी सेंटेंस विद द लिंकिंग डिवाइस. ओके, सो आपको कुछ भी यहाँ पे हाईलाइट नहीं करना एग्जामिनर को शो करने के लिए. क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Any doubt still here? There is a candidate here with the name of Zoom user. Can you please introduce yourself? Yes. I guess the person is traveling, right? Can you please introduce yourself? Hello. Yes. Yes, but my name is Kashyap. Mm-hmm. And right now I am driving. I am just attending your class. Okay, so you are attending this session for the first time, right? Right, first time. Okay, I missed your name. My name is Kashyap Kumar. Okay, and where are you from? Right now I am in Canada. Okay, I am a truck driver. okay. So, And when are you planning to give exam? maybe 3-4 months. Okay, so you must be preparing for the GT, right? Right. Okay, great. But try to be regular in your classes. Yes, ma'am. Regularly. Okay. Yes. Okay, now let's talk about step 4. How you need to organize your essay into paragraphs. Right? Use paragraphs to organize your essay so that you can show the examiner that you are making clear parts. You're addressing all parts. Paragraphing is basically to show. Now how? See this. Make sure your paragraph contains a clear and developed topic with a minimum of 2 sentences. How? You can use this acronym PEEL. Point, example, explain, and link. Now introduce your topic or topic statement. As I told you, जब भी paragraph को start करो अपना topic statement लिखो कि advantage ये है, disadvantage ये है, या फिर the reason for your agreement is this, कि आपने agree करा तो ये वो reason. आपने अपना point लिखा, example लिखा, उसे explain करा. Now this link to the next topic means अब आप second statement को describe करने वाले हो, अपने second idea को describe करने वाले हो. So there has to be some link जब आप उसे start करो तो, right? You must use enough paragraphs to clearly show कि आपने एक structure response लिखा है, ताकि आपके ideas जो present हो रहे हैं वो examiner को logically दिखे and coherence and cohesion में आपको score जो मिले वो at least 6 and above मिले, अगर आपने organization जो अपने paragraphs की वो clearly करी है. Now see here are some ideas कि आप कैसे अपने paragraphs को, how many paragraphs basically you can include in your essay. So अगर आपका question आता है to what extent do you agree or disagree, इसे आप 4 to 5 paragraphs में लिख सकते हो. See कैसे लिख सकते हो. Introduction लिखोगे,
सेकेंड पैराग्राफ में आपने क्यों एग्री और डिसएग्री करा वो आप लिखोगे, अगर आपने एग्री करा है तो भी लिखोगे, अनदर रीजन लिखोगे अपने एग्री करने का। देन फोर्थ पैराग्राफ में व्हाई आई डोंट एग्री और डिसएग्री, जैसे मैंने आपको बताया था कि एग्री और डिसएग्री जब आपका व्हाट एक्सटेंट की फॉर्म में आता है तब आप 80% एग्री कर सकते हो, 20% डिसएग्री कर सकते हो, और इधर वाइस वर्सा कर सकते हो, राइट? सो सेम वे जरीन, नाउ कैन यू सी दिस? Yes, ma'am. हाँ, सो सी जरीन, दिस वाज योर डाउट, राइट? सो अगर आपका एग्री एंड डिसएग्री आता है, फर्स्ट बॉडी पैरा, सपोज यू आर गेटिंग एग्री, आपने एग्री करा स्टेटमेंट से, बट स्टिल यू बिलीव कि नहीं 20% तो यू आर गेटिंग डिसएग्री विद द स्टेटमेंट। सो फर्स्ट पैराग्राफ इंट्रोडक्शन, सेकंड में आप क्यों एग्री करा उसके सपोर्टिंग आइडियाज लिखोगे, थर्ड दैट मींस BP2 में भी आप क्या लिखोगे, एग्रीमेंट के आइडियाज, बट फोर्थ पैराग्राफ जो आप 20% डिसएग्री करते हो उसके लिए फ्रेम करोगे नेक्स्ट पैराग्राफ, एंड देन योर कंक्लूजन। So in this situation, आप 4 to 5 So you mean to say in this essay 2 paragraphs for agree and 1 paragraph for contrast? Yes, because the question says to what extent do you agree or disagree. The right way to do this type of, see, if you have completely, your question is do you agree or disagree, then you can simply choose one side that I completely agree and I completely disagree. But if you have this kind of a question, to what extent do you agree or disagree? So extent means kitna, right? So here you can do this part कि आप 80% 90% agree कर लो and then 10% आप disagree भी कर सकते हो. It's up to you, right? Yes, ma'am. Next is discuss both views, give your opinion. So here also introduction आएगा, first view, second view, opinion आप next paragraph frame कर सकते हो, and then your conclusion. Ma'am, Yes. can we write opinion and conclusion in one paragraph, the last one? You can write, because introduction आप अपना introduction में भी आप अपना opinion mention करते हो, right? So Yes, you ma'am. can do it that way also, but you can try this also. Okay? Okay. Both are acceptable. Why is this so? Give reasons for this and solution. So why? Reasons के लिए one paragraph, then again reasons for this second, and then solutions के लिए again next paragraph. The correct way to answer is this. ये आपका correct way होता है. Try to follow this format. Do advantages of international tourism outweigh disadvantages? So अगर आपको लगता है advantages ज्यादा हैं, then write 3 advantage and 2 disadvantage, or vice versa. Why is this so? One paragraph. Effects on individual, next paragraph. Effects on society, next paragraph. इसको combine नहीं करो. Make it clear to the examiner कि आपको address करना आता है all parts. Okay? Do use paragraphs, linkers को use करो within the paragraph. Leave a space between each paragraph. जब भी आप next paragraph को लिख रहे हो तो एक line leave out करो. Use a paragraph for each topic. Use an introduction or conclusion also. Don't use single sentence paragraph. Single sentence से कोई paragraph नहीं होता, right? And don't use very long paragraph कि आपका whole page cover हो जाए. ऐसा भी नहीं करना आपको. Write accordingly. Planning करो पहले. Step number 5, use less common vocabulary and spell it correctly. ठीक है, spelling errors, obviously if you're gonna make spelling errors, you will not get marks for the same, right? band score आपका again decrease हो जाएगा. So band descriptors में आपने देखा है कि band 8 writer जो हैं वो skillfully use करते हैं uncommon lexical items. So when we learn a language, we use common and uncommon terms. Common terms वो words and phrases होते हैं जिसे हम everyday use करते हैं, पर्सनल एक्सपीरियंसेस में और इवन डेली हैबिट्स में. अनकॉमन टर्म्स वो वर्ड्स होते हैं जिसे हम नाउ वी यूज देम व्हेन वी डिस्कस स्पेसिफिक टॉपिक्स, और या फिर जब हम करते हैं अपनी इडियोमैटिक लैंग्वेज यूज, फ्रेजल वर्ब्स, राइट? सो मेक श्योर कि आपको अनकॉमन टर्म्स पे फोकस करना है. वर्ड्स दैट आर ओल्ड फैशन एंड नॉट यूज्ड इन एवरी. Excuse me, ma'am, I have a question. यस,
Ma'am, do we have any book in which uncommon terms are present? You can check our vocabulary. I did try to make a vocabulary which is uncommon and topic specific also. See, uncommon, firstly, whenever you try to focus on vocabulary na, try to focus it on topic wise. कि ऐसा नहीं ये 100 words learn करने और यही vocabulary आएगी. This is never the case. आपको vocabulary हमेशा topic wise आनी चाहिए, right? कि what is related to this, pollution से क्या related है, environment से क्या related है, because you have to look for collocations also, है ना? collocations भी तो आपको focus करनी है कि ये collocate करता है word के नहीं करता है इसके साथ. Yes, ma'am. So words that Ma'am, are have you given session about vocabulary topic wise? not topic wise is there in the application. Check application IELTS resource, उसमें आपकी vocabulary है. vocabulary topic specific है, collocations है, idioms है, and phrasal verbs है. All are there. Okay. So words that are old fashioned and not used in everyday speech should not be used. If you choose synonym, the meaning must be same and must not alter the idea being presented. So you know कि आपको synonyms कैसे use करने हैं, right? So अगर हम example देखें adolescent and teenager, close meaning है but आप इसको interchange नहीं कर सकते. Toddler and baby, they have quite different meanings. So collocations, आपको collocations पे focus करना है. When you go for writing task 2, collocation is required, right? So if you're discussing child crime, you could use the term minor, है ना? As this is a legal term to use to describe the children under the age of 18. So if you use phrasal verb, make sure कि आप correct preposition use कर रहे हो, throw out कर रहे हो या throw away कर रहे हो, throw up कर रहे हो, right? So phrasal verbs पे भी आपको focus करना है कि आपको कहाँ लिखने हैं. And idioms, you know about very well idioms. मैंने idioms पे पूरा एक session कराया हुआ है आपको, right? Next is don't use memorized language, phrases and example. ये तो बिल्कुल भी नहीं करना. Some students I have seen that they learn some statements, कुछ learn कर लिया and then start writing the same. No, don't use any memorized language. There are the examiners, we are the teachers, we know कि कौन सा कहाँ पे available है and कौन सा learn out है, right? We do check hundreds of tests every day, right? So please do not learn any phrases, any example, कुछ भी ऐसा learn नहीं करना because they are that's very easy for examiner to spot, right? So overuse होगा अगर phrases का, idioms का, किसी भी चीज का, so it's gonna affect your score, right? Like see, the grass is always greener on the other side, love is blind, on the top of my head, old is gold. So do not use the phrases like this. Now see here, the following terms should not be used when writing as they are vague and do not address a task appropriately. हमेशा अपने language को clear रखो and appropriate word choice करो. Now see, nowadays you can use in recent times. Can't, it's a contraction. Cannot. Controversial issue, major issue. The pros and cons, benefits and drawbacks. Firstly, the primary reason why. Secondly, lack of education is another reason why. So this is how you can start your next topic sentence. Truths of the discussion, the main key, the main issue is stuff, thing, use the correct word. Example, for example, e.g. nahi likhna. Every coin has two sides, two faces. No, there are both advantages and disadvantages. A double-edged sword, the solution can cause issues. In a nutshell, in a conclusion, right? So please focus कि आपकी language clear होनी चाहिए and it's more of formal. Step number 7, use a variety of complex sentence structure. Because band 8 अगर आपको score करना है, it is expected कि आपने wide range of sentence structure accurately लिखे हो and अपने ideas और opinion को clearly present किया हो, right? और sentences error free होने चाहिए. Spellings mistakes बिल्कुल नहीं होने चाहिए, right? So mix of complex और simple sentences देखो.
अगर आपको दिस कॉम्प्लेक्स एंड सिंपल सेंटेंसेस करने, ग्रामर सेशंस में जाके देखो प्लीज। राइटिंग करने से पहले योर ग्रामर हैज टू बी इम्प्रूव। सो ग्रामर सेशंस में जाओ, ग्रामर के टॉपिक्स को, इफ यू हैव सफिशिएंट टाइम, like for Kashyap I'm saying, Kashyap, if you have sufficient time to prepare for IELTS, आप ग्रामर के सेशंस को वहां पे अटेंड कर सकते हो। ओके, सो योर पंक्चुएशन नीड्स टू बी करेक्ट, कैपिटलाइजेशन होनी चाहिए, कॉमास, फुल स्टेप्स करेक्टली, ये सब चीजें आपकी इवैल्यूएट होती है। द मोस्ट कॉमन एरर्स दैट कैन बी फाउंड इज जब आप टेंसेस को गलत लिखते हो या पैसिव वॉइस को गलत लिखते हो या आप एरर्स कर देते हो सिंगुलर या प्लूरल नाउन में, आर्टिकल्स आपने गलत लिखे हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहाँ प्लूरल आना है, कहाँ पे सिंगुलर आना है, प्रपोजिशंस गलत है, पंक्चुएशंस गलत है, सो यू कैन नेवर स्कोर बैंड 8, राइट। सो इन एरर्स को फाइंड आउट करो कि आप कहाँ पे एरर्स करते हो। नाउ स्टेप 8 which is the last step, checklist, कि आपको ये सब चेक करना है अपने ऐसे राइटिंग में कि that your writing contains all these features or not. So for task response कैसे हम चेक करेंगे कि did you answer all parts of the question sufficiently? 3 parts थे, 4 parts थे, आपने 4 लिखे कि नहीं लिखे, right? Are your ideas and are all your ideas support directly related to the question, relevant ideas लिखे हैं, or do you over generalize the topic? Generally कुछ भी नहीं लिख देना, right? Does the examiner know exactly what you think, and do you present this position clear for the whole essay? आपने कहीं self contradictory statement तो नहीं कर दिया, right? So आपके ideas clear हैं, examples हैं, ओवर 250 वर्ड्स लिखा, तो टास्क रिस्पॉन्स में आपको ये सब चीजें चेक करनी है। कोहेरेंस एंड कोहेजन में आइडियाज का फ्लो कैसा है, सारे आइडियाज आपने इजीली लिखे हैं, एग्जामिनर के लिए इजीली अंडरस्टैंडेबल है, क्लियर इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन में ओपिनियन आज था तो आपने ओपिनियन मेंशन करा है कि नहीं करा, कंक्लूजन क्या लिखा है, राइट, लिंकिंग वर्ड्स एंड फ्रेजेस हैं, रिपीटिशन तो नहीं है, हर एक सेंटेंस आपने लिंकिंग डिवाइस से तो नहीं स्टार्ट कर दिया, फर्स्टली सेकेंडली थर्डली, नो, राइट। सो सफिशिएंट पैराग्राफ्स आपने कंस्ट्रक्ट करे हैं कि नहीं करे, वन पैराग्राफ में वन आइडिया डेवलप करो, राइट। लेक्सिकल रिसोर्सेज, रेंज ऑफ वोकैबुलरी यूज करिए रिलेटेड टू द टॉपिक, वोकैबुलरी चॉइस क्या है, मेमोराइज लैंग्वेजेस तो यूज नहीं करी, कॉलोकेशंस करेक्टली यूज करिए, अनकॉमन वर्ड्स यूज करें कि कॉमन वर्ड्स यूज करें, स्पेलिंग मिस्टेक्स, टाइपो एरर्स, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ड यूज किया है कि नहीं, सो दिस इज ऑल लेक्सिकल रिसोर्सेज। ग्रामेटिकल रेंज में आपने सिंपल सेंटेंसेस यूज करे हैं, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, कैसे सेंटेंस स्ट्रक्चर आपने यूज करा है यहाँ पे, ठीक है। देन आपने टेंसेस कैसे यूज करें, सेंटेंसेस तो आपके हो गए, टेंसेस कैसे हैं आपकी, मॉडल्स, वर्ब्स, पंक्चुएशंस, लॉन्ग कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंसेस हैं, एरर फ्री है, पंक्चुएशन करेक्टली किया है, कैपिटल लेटर से स्टार्ट कर रहे हो कि नहीं कर रहे, कैसे सेंटेंसेस आप स्टार्ट कर रहे हो, राइट। डिड यू यूज कॉमास फॉर कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस जहां पे रिक्वायर्ड है या नहीं, फुल स्टॉप्स कहाँ लगा रहे हो, फिनिश कर रहे हो सेंटेंस को, सो मेक श्योर कि आप इन सब चीजों को फॉलो अप करो, right? So whenever you write any essay, you have to check all these things, okay? It's not that hard कि आपको ये समझना है, format you are clear with, but you have to organize your thoughts grammatically, है ना? So make sure कि आप क्या करो, application का use करो, because application में there are different things. New users are not aware of this, that we have vocabulary, everything is there in the application. We have recorded classes, so recorded classes को rewatch करो, sessions को attend करो 4 to 5 p.m. right, every day, so that you can have all the doubts and queries with me. Now any doubt, any query, please you can ask me. Ma'am, I am having difficulty in vocabulary. So go to the application. How to find out that? Go, just open From the application. Application में see the IELTS resource.
Vocabulary. See the vocabulary. Once you open the application, next to the writing is vocabulary. Where is vocabulary? Once you open the application, can you see all the modules: speaking, listening, reading, writing? Yes, ma'am. So writing ka next is vocabulary. Okay. So in vocabulary, see vocabulary, idioms, phrasal verbs, collocations. Yes, ma'am. Everything is there. So when you see vocabulary, there are different topics here: gadgets, transportation, global warming, crime and law. Just open any one. Now suppose I have opened Okay, crime and ma'am. law, Okay, okay. addiction. So addiction pe you will have the meaning also, the Hindi meaning, the definition, and 3 examples how you can use this word. So for every word, Okay, ma'am. there are like 3 examples how you can use this. Hindi meaning is also there and definition is also there for you. Okay. Yes, ma'am. So please use it in a correct way. If you're not aware, just explore your application. Okay. Idioms are also there, collocations are also there. Yes, ma'am. Okay. Any doubt? मैम मैम आपने टास्क 1 के लिए वोकेबलरी